Hi guys, Navratri is here and that means good vibes, pure food and some soul soothing khana. One bite and I swear ये टेस्ट तो straight from heaven है, full marks. Also, नवरात्रि के जो 9 दिन होते हैं ये सिर्फ फास्टिंग के लिए नहीं होते. It's a time to reset your body and mind. Sattvic food helps cleanse the soul. ये रहा हमारा हीरो साबूदाना. छोटी सी चीज लेकिन एनर्जी से फुल ऑन. इसे 4 से 5 घंटे के लिए सोक किया गया है. प्रेस करके देख लो, एकदम सॉफ्ट हो गया है. एंड ऑल्सो दिस इज द टेक्सचर वी वुड नीड टू मेक साबूदाना खिचड़ी. आलू भी रेडी है, बॉइल्ड, पील्ड और नीटली चॉप्ड. सिंपल इंग्रेडिएंट, सॉलिड इम्पैक्ट. अब बारी है क्रंच की. पीनट्स को थोड़ा सा क्रश करते हैं, पाउडर नहीं बनाना, जस्ट बाइट वर्दी. लुक एट दैट टेक्सचर, नटी, चंकी एंड टोटली परफेक्ट. पैन में गया देसी घी क्योंकि लेट्स बी ऑनेस्ट, एवरीथिंग टेस्ट बेटर विद घी. जीरा डाला, फिर नए पीनट्स. Yes, fresh ones because these will bring in that extra crunch. अब आएगा असली तड़का, कड़ी पत्ता और वो भी जेनरस अमाउंट में. सोक्ड साबूदाना जा रहा है पैन में. नाउ मिक्स इट ऑल टुगेदर. सब कुछ अच्छी तरह ब्लेंड होना चाहिए. मिक्स मिक्स मिक्स. अब इसे हम कवर करके साइड में रख देंगे. तवे पे थोड़ा और घी और आलू को शैलो फ्राई करेंगे टिल गोल्डन. थोड़ा सा पेशेंस दिखाना है बिकॉज क्रिस्पीनेस इज द रियल गेम. अब गोल्डन पोटैटोज जा रहे हैं खिचड़ी में एंड ट्रस्ट मी, ये तो कॉम्बो बन गया मेड इन हेवन. अब डालते हैं क्रश्ड पीनट्स. साबूदाना सॉफ्ट होता है तो ये क्रंच उसका बेस्ट फ्रेंड है. नाउ वील बी एडिंग सॉल्ट and again mixing it all together. Let's season it with black pepper. अब थोड़ा सा lemon juice for that zesty punch. Finishing touch here dhania because garnish is not just fancy, it's flavorful too. Look at that shine, the texture. This isn't just food, this is divine indulgence. Sabudana is not just Vrat ka food, it's gluten free, full of carbs and keeps you energized for hours. Fasting or feasting, Sabudana is always a win.
You guys let me know in the comment section how do you like it. Also like, share, subscribe for more such videos. One more bite और एक और thumbs up. Taste Navratri approved. Also guys, I will be coming up with Navratri Thali, so stay tuned for that. Also hit on the bell icon so you get notified once I upload the Navratri Thali video. Till then, enjoy.